the value below the surface of the earth, above the surface of the earth, and on the surface of the earth will be different. Similarly, on the value of g, rotation का भी effect होता है. Like say, this is the earth or कोई body, this angle is called latitude angle, इस पोजीशन पे है, अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है. तो विदाउट रोटेशन जो जी की वैल्यू होती ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी डैश विल बी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू आर ई कॉस स्क्वायर लैम्डा. Lambda is called latitude angle. So the value of g that you usually take 9.81, it is that value of g which is at lambda equals to 45 degree. ठीक ना? And the value of g that you take 9.81, it is the value of g which is usually at lambda equals to 45 degree. And otherwise due to the rotation. So in this way, one simple objective question could be what? At what point the value of g is maximum? At the pole, because lambda will become 90 degree. Cos 90 is 0, so nothing will be subtracted. At the equator, value of g will be minimum because lambda will be 0, cos 0 is 1, so the maximum term will be subtracted. So from this, one very important question becomes what? You understand that at the equator the value of g is less, at the pole it is what? More. So they ask you at what height above the pole the value of g will be same as what is on the surface of the earth at the equator. So at the equator, this much is the decrease. Omega square Re cos square lambda. Lambda is what? Cos lambda is 1. So omega square Re, this is the decrease because of rotation. And above the surface of the earth, h height pe, what is the decrease? 2gh upon Re. This is the decrease because of the height. So if the decrease because of the height becomes equal to the decrease because of rotation, so the value of g at that place will be what? Same. So it's a very important question from this. You can get the value of h. Omega की value आपको पता ही होती है अर्थ का. 24 hours is the period of revolution. So omega is what? 2 pi over capital T. ठीक ना? 2 pi over capital T. और 24 hours को you need to convert into what? Second. उससे फिर h की value आ जाएगी. या फिर sometime they'll ask you in terms of omega itself. ये ओमेगा के टर्म से पूछेंगे so that you need not to do any calculations, right? Now say, I was telling you कि gravitational field intensity, जैसे होता है ना electric field intensity at a point is the force acting on plus 1 coulomb charge. Masses में you have only positive mass, so force acting on 1 kg mass at a place is called gravitational field intensity, right? ऐसे ही gravitational potential at a point is what? Work needed to carry 1 kg mass from infinity up to that point in the gravitational field, right? बिल्कुल सारे फॉर्मूले रिंग का या स्फीयर का, सॉलिड का, हॉलो का, everything is same. The only thing is what? Because mass is only positive, so gravitational field intensity will always be directed, the force will always be attractive. So gravitational field intensity will always be directed towards that mass. उस मास की ओर होगी जिस मास के ड्यू टू है. It will always be towards that mass जिस मास के ड्यू टू है. ठीक है ना? और gravitational potential will always be negative because the force is what? Always attractive. So है क्या कि वो वहां पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, आप उसकी जगह यहाँ पे कांस्टेंट कर दोगे कैपिटल जी, चार्ज क्यू की जगह कर दोगे मास एम, सारे फॉर्मूले आ जाएंगे. जैसे एम मास से 8 सिंदूर, व्हाट बी क्यू चार्ज से 8 सिंदूर, व्हाट बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर. यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल जी इंटू एम बाई आर. हाँ, ये नेगेटिव लगाओगे बिकॉज मास में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, so minus gm by r. R is what will be gravitational field intensity from a mass, capital G into m upon r square. अब remaining equations, ring का this thing, that thing, hollow sphere, solid sphere, apply exactly the same formula that you remember for the electrostatics. Only replace these constants like this. And see here, the important questions in it, what? These important questions they are, if they ask you mass m mass 2m, जैसे से, हाँ पहले मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं.
Like in the electrostatics you had, they can give you number of charges at different locations. And they ask you what is the electric field intensity at this point. आप लोग क्या करते थे? Just point the point at which you need to calculate the electric field intensity. Take that point as the origin. Calculate the electric field intensity due to all the charges. Mark the directions. Find the resultant of them. Same thing is true here also. Like if they say M at the corner of an equilateral triangle of side A, what is the gravitational field intensity at the center? It will be 0. Because see, at that point, due to all the three masses will be in this side, in this side, in this side. So all the three are equal. When you'll find the resultant, that will be what 0. So otherwise, at any other point, you'll find the gravitational field intensity जो फॉर्मूला बताया मैंने उसके due to अब हर एक मास की gravitational field intensity उस मास की ओर होगी. Find that, mark them, then find the resultant of all the gravitational field intensities. That will be the gravitational field intensity or gravitational potential, because it's a scalar quantity. Unit becomes what? Kg, joule per kg. So gravitational potential, it's a scalar quantity, so it's simple. Calculation is simple. At any point, due to one mass m1, m2 mass के due to m3 mass के due to सबका sum कर दो, that will be the gravitational potential. So you see, जैसे बोला गया, m mass, 2m mass separation is 3a, right? They ask you, what is the gravitational potential at that point? What is the gravitational potential at that point where gravitational field intensity is 0? You see, इसके due to field इस ओर होगी, इसके due to इस ओर होगी. x डिस्टेंस दूर इसकी फील्ड होगी जी एम बाई एक्स स्क्वायर. इसके ड्यू टू होगी यहाँ पे g into 2m divided by 3a minus x square. Get the value of x. Now potential at this point will be v is equal to minus gm by x minus of g into 2m upon 3a minus x. You'll keep the value of x which you get from this, you'll get the potential. Is that clear? So they may ask you these kind of questions. And here also we have gravitational potential energy m1, m2, separation r. It will be u equals to minus of g m1, m2 by r. Gravitational potential energy will always be negative. Gravitational potential energy will always be what? Negative. It will be this much. Is that clear? Now see. Now here we have two more things in the chapter of gravitation. That is what? One is the escape velocity. So the concept of escape velocity is very generalized concept. Whenever the total energy of a system is negative, its constituent particles cannot leave each other by itself. To make the particles away from mutual interaction, you need to supply some kinetic energy so that the total becomes 0. And from this concept, you can find the escape velocity. Like what? Earth की radius RE, mass is ME, there is a mass M at the surface. So potentially becomes what? Minus G ME M by RE, right? Now plus half MV square, VE square. Total should be 0. It's a small VE nikala, that becomes root of twice of G ME by RE. There's the escape velocity. Its value on the surface of the earth is 11.2 kilometer per second, and it does not depend upon direction. If you throw a ball from the surface of the earth vertically upwards, to make it escape, you need to give 11.2 kilometer per second velocity. Even if you throw it at 45 degree, you need to give the same velocity, because this expression is a scalar expression. So escape velocity does not depend upon the direction. Is that clear? And one more thing becomes clear from here, because this is from the surface of the earth. GME is what? Small g RE square. So this is VE is equal to root of 2 into what? VO. GME upon RE. Square of GME upon RE was the orbital velocity of that satellite, which was very close to the surface of the earth. And this velocity is what? Two times of that. So इस concept को आप generalize कर लो. What? कोई satellite अर्थ के surface के close है, आप उसकी velocity √2 times कर दे तो यानी 1.41 times ये escape कर जाए.
किसी भी हाइट पे सैटेलाइट है, whatever is its velocity there, if you make its velocity root 2 times of that, it will escape from there. And velocity आप जैसे इसकी 1.41 times करोगे, it will escape. So from this, one more concept is generated. What it is this? For the circular orbit satellite, ये केवल circular orbit वाले satellite के लिए valid है. Suppose कि satellite is at a height h, mass m, radius of the earth re, mass me. What is its potential energy? You need not to remember. You write directly the formula re plus h minus g m1 m2 upon what? Separation. This is the potential energy of this satellite. What will be its total energy? Half of this minus half of what will be its kinetic energy? Remove the minus sign of total energy. You will remember this. It's very important. So potential you can directly calculate. Total energy will be half of that. And kinetic energy will be remove the negative sign of the total energy, that becomes the kinetic energy. अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लुक एट दिस, है क्या? काफी कुछ क्वेश्चंस दे आर बेस्ड अपॉन दिस पॉइंट. व्हाट? K1 plus P1 plus W is equal to P2 plus K2. This. It could be W or it could be additional kinetic energy. Additional kinetic energy. अब इस ये फॉर्मूला डिफरेंट फॉर्म में कैसे चेंज होगा, आप लॉजिक से ले सकते हो. आई टेल यू हाउ. आपसे बोला गया एक सिस्टम में 3 मासेस हैं M M M. They are at the corner of an equilateral triangle. Now, how much work need to be done to make the separation between them 2A, 2A, 2A? How much work need to be done? You'll do what? System is not having any kinetic energy in the beginning. K1 0, initial potential energy you can find. 3 सिस्टम बनेंगे, तीनों दो के 3 पेयर्स, तीनों की पोटेंशियल का सम प्लस W. बाद में भी पोटेंशियल सेपरेशन बिकम्स और 2A, 3 पेयर्स, तीनों की पोटेंशियल का सम K2 is not 0. So if in a system there's only potential energy, you need to do from that. बोला गया एक m मास का ब्लॉक is to be carried up to height h from the surface of the earth. Earth की radius re mass me. How much work is needed? You'll write the potential at the surface of the earth plus W is equal to what? P2, K2 दोनों रहेगा 0 because it has to be carried only. Right? ठीक है ना? बोलेंगे या वर्क नहीं पूछते, बोलते हाउ मच एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू बी सप्लाइड. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स व्हाट? P2. बोला गया m मास का ब्लॉक अर्थ के सरफेस पे, व्हाट kinetic energy should be given to it so that it becomes a satellite at a height h. अब जब h हाइट पे सैटेलाइट होगा तो उसके पास क्या होगा? टोटल एनर्जी. सो P1 प्लस P2 प्लस K2 दोनों, और निकालोगे कैसे? इस तरीके से आप P निकाल लो, उसका हाफ कर दो, टोटल एनर्जी आ गई. यहाँ पे क्या होगा? P1 प्लस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इनिशियली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो P1 प्लस एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू T2. बोले सैटेलाइट की ऑर्बिट चेंज करनी, H1 हाइट ऊपर था, H2 हाइट ऊपर, उसे सैटेलाइट बनाना है, तो T1 प्लस W या एडिशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल व्हाट? T2. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन दिस. मतलब व्हेन यू नो द बेसिक फॉर्मूलाज तो लोग इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द ग्रेविटेशन. नाउ से अब आप देखोगे जो है कि नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मैं आपको अभी मैं कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि वो कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके पैटर्न में मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ आर्किमिडीज लॉ. सो यू नो आर्किमिडीज लॉ में क्या होगा कि यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ व्हाट? बॉइंट फोर्स. बिल्कुल जेई मेन में इजी क्वेश्चन जैसे आते हैं फंडामेंटल डेफिनेशन पे बेस्ड, बिल्कुल वैसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वही कॉन्सेप्ट. तो बॉइंट फोर्स इज व्हाट? बॉइंट फोर्स इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज द बॉइंट फोर्स. वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ठीक है ना? बॉडी फ्लोट कर रही हो, बॉडी सिंक कर गई हो, point force will always be equal to what? FB will always be equal to weight of the displaced liquid.
दिस विल बी द बाइंड फोर्स। एक रो 1 डेंसिटी का लिक्विड है, रो 2 डेंसिटी का ब्लॉक साइड ए, क्यूबिकल ब्लॉक, रो 2 डेंसिटी का इसमें फ्लोट कर रहा है, रो 2 इज लेस देन रो 1। बोल गया इसकी कितनी लेंथ लिक्विड के अंदर होगी? आपने बोला इसकी एक्स लेंथ लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? ए स्क्वायर एक्स, और उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट क्या होगा? रो 1 जी। सो दिस इज द बाइंड फोर्स। अब बिकॉज इट्स फ्लोटिंग, so bind force FB will be upwards, weight mg will be downwards, और weight mg कितना होगा? a cube into rho 2 into z, a cube into rho 2 into z. So when something is floating, you need to keep what? Bind force is equal to weight of the block. और bind force how to calculate? बस आपको पता क्या करना है, ब्लॉक का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है, सो ब्लॉक के ड्यू टू उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी इनटू जी, दैट विल बी द बाइंड फोर्स। सो इसी में दे में आस्क यू व्हाट, एक सिलेंडर है और ये सिलेंडर दो लिक्विड्स के अंदर है। नीचे वाले की डेंसिटी रो 1, ऊपर वाले की डेंसिटी रो 2, सिलेंडर के अपने मटेरियल की रो नॉट, रो 2 इज लेस देन रो नॉट इज लेस देन रो 1। सिलेंडर की लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। बोलोगे व्हाट लेंथ ऑफ द सिलेंडर विल बी इन द लिक्विड 1 एंड व्हाट लेंथ विल बी इन द लिक्विड 2। लेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर इन द लिक्विड 1 इज x, तो लिक्विड 1 का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? a इंटू एक्स इंटू इतना वॉल्यूम, उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इतना। लिक्विड 2 का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ? a इंटू एल माइनस एक्स, और उस डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इंटू रो 2 जी। दिस इज अ टोटल बाइंड फोर्स, दिस इज अ टोटल बाइंड फोर्स जो कि दोनों के लिक्विड की वजह से लगेगा। दिस इज अ टोटल बाइंड फोर्स। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच लिक्विड अप्लाइज the bind force on the liquid, the total bind force is due to liquid, which liquid? You need to answer liquid 1. Why it is so, I'm not discussing that, ठीक है ना? वो ठीक है ना, पूरा का पूरा बाइंड फोर्स किससे लगेगा? लिक्विड 1 से, बट कैलकुलेशन का ये तरीका आप निकालोगे लिक्विड 1 से और लिक्विड 2 से। इन दिस बिकॉज दिस फ्लोटिंग, सो ए एल रो नॉट जी, सिलेंडर का वेट क्या होगा? ए एल रो नॉट जी, you'll get the value of x, so you'll get what length is in liquid 1 and what length is in liquid 2. इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो बाइंड फोर्स में देन यू सी कि बाइंड फोर्स के बाद आई एम टेलिंग यू वन कॉन्सेप्ट अबाउट द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन में कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ दिस द इमेजिनरी लिक्विड सरफेस, on this surface we draw an imaginary line of length L. So because of surface tension एक force दोनों ओर लगेगा, line is drawn on the surface, the force of surface tension is perpendicular to the line, and force on unit length is called surface tension. T is equal to F by L. Means if on the L length F force is acting, so what force is acting on unit length, that is called what? Surface tension. T equals to F by L. All right, now look at this. इसके कैसे यूज आ सकते हैं? बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिल्कुल फंडामेंटल यूजेस आने हैं। यहाँ पे एक है सोप सॉल्यूशन की फिल्म जिसका सरफेस टेंशन टी, यहाँ एक स्लाइडर है एम मास का, एम मास एल एन का स्लाइडर। अब ये स्लाइडर इट्स रेस्टिंग, सरफेस टेंशन टी के फोर्स की टेंडेंसी होती है, इट ऑलवेज, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, इट विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द फिल्म और द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन टी का फोर्स सरफेस के पैरेलल लगेगा। सपोज दिस स्लाइडर इज द इमेजिनरी लाइन, इसके परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लगेगा, कितना लगेगा? टी इंटू एल, टी इज द फोर्स फ्रॉम ऑन द यूनिट लेंथ, तो एल लेंथ पे कितना होगा? टी एल। फिल्म में दो सरफेस होंगे, एक इस ओर का और एक दूसरी ओर का, इट्स सरफेस एक्टिविटी। लिक्विड में देयर इज वन सरफेस, इन द फिल्म देयर आर टू सरफेसेस, दोनों ओर से 2TL, दिस अपवर्ड्स, और डाउनवर्ड फोर्स व्हाट? mg। इनमें से कोई एक पैरामीटर अननोन होगा, यू कैन कैलकुलेट दैट पैरामीटर। ऑलराइट, नाउ सी दिस, आप इसी में अगर आपको एक लिक्विड का सरफेस डेल्टा ए इंक्रीज करना है, सरफेस टेंशन इज टी, दिस मच वर्क नीड टू बी डन। आपको वर्क कितना करना पड़ेगा? टी इंटू डेल्टा ए, इतना वर्क करना पड़ेगा इफ यू वांट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय डेल्टा ए। दिस क्लियर? सो यू सी, लिसन वन मोर पॉइंट,
आपने सरफेस एरिया इंक्रीज किया, बाहर से वर्क किया गया. So how much work has to be done? This work is stored on the surface of the liquid in the form of surface elastic surface energy. और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हुआ तो सरफेस एनर्जी इतनी ही रिलीज होगी और वो सरफेस एनर्जी इसका टेम्परेचर बढ़ा सकती है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी. आपको सरफेस एरिया इंक्रीज कराना है, वर्क बाहर से नहीं किया गया, उस मटेरियल ने अपनी एनर्जी खर्च करके सरफेस एनर्जी इंक्रीज की, तो इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज. मैं आपको दोनों टाइप के एग्जांपल देता हूं, you'll see this. सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन. इट्स ए वायर लूप कवर्ड फ्रॉम 3 साइड्स, इट्स हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे है, और ए लेंथ का स्लाइडर, सो फिल्म सरफेस टेंसर टी. बोलेंगे इसे इस और एक्स स्लाइड कराना है, हाउ मच वर्क विल बी डन. आपने फिल्म का एरिया कितना इंक्रीज किया, एल इंटू एक्स, एक और का. फिल्म में दोनों ओर एरिया होगा, बैक साइड में भी होगा, तो दोनों का इंक्रीज ऑफ एरिया 2lx इंटू टी, दैट इज अ वर्क डन. इतना वर्क करना पड़ेगा. इंक्रीज ऑफ एरिया ऑफ बोथ द साइड इंटू सरफेस टेंशन टी, दैट विल द वर्क डन. सो दिस क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ सी, अब इसी में मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाट. एक आर रेडियस की लिक्विड ड्रॉप है, सरफेस टेंशन इज टी, बोला गया इट इज ब्लोन इनटू द 1000 इक्वल स्मॉलर ड्रॉप. It's blown into the 1000 equal smaller drops. How much work is needed? पहले surface area A1 was 4 pi r square. बाद में 4 by 3 pi r cube. छोटी ड्रॉप का रेडियस r into 1000 is equal to 4 by 3 pi capital R cube. बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम सारी छोटी ड्रॉप्स के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा. So from here you get small r equals to r by 10. So surface area later becomes A2 equals to 4 pi r square by 100, एक ड्रॉप का और 1000 ड्रॉप्स का into this thing. This is 40 pi r square. So what is the increase of surface area delta A? It's 40 minus 4 pi r square, that is what, 36 pi r square. So work done W will be equal to T into 36 pi r square. ये हुआ एक लिक्विड ड्रॉप के लिए. This for what? लिक्विड ड्रॉप. अगर ये 100 बबल होता, बोलिए 100 बबल को छोटे छोटे स्मॉल बबल्स में स्प्लिट कराना, हाउ मच वर्क विल बी नीडेड? इसका 2 टाइम्स जो वर्क कैलकुलेट किया, इसका 2 टाइम्स. द रीजन बीइंग सरफेस एरिया अंदर भी है और सरफेस एरिया बाहर भी है. सो उस केस में क्या होगा, 2 टाइम्स. इसी में जो और क्वेश्चंस बनते, बोला गया दिस लिक्विड ड्रॉप स्प्लिट्स इनटू 1000 इक्वल स्मॉलर ड्रॉप्स बाय इटसेल्फ. बाहर से वर्क नहीं किया गया. व्हाट विल बी द डिक्रीज इन द टेम्परेचर? What will be the decrease in the temperature? तो उस केस में जो वर्क आपने किया, आप इसे इक्वल कर दोगे मास mc डेल्टा टी, जो मींस व्हाट, इतनी हीट इससे ली जाएगी जो कि वर्क में कन्वर्ट होगी, तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाएगा m. मास m becomes 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो. मास mc डेल्टा टी या डेल्टा थीटा कर देता हूं. डेल्टा थीटा इज द डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. इसी का रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं. 1000 equal smaller drops call C to form a single bigger drop. 1000 equal smaller drops call C to form a single big drop. What will be the increase of temperature? अब टेम्परेचर बढ़ जाए, सेम इक्वेशन यही बनेगा. मैंने यहाँ बड़ी ड्रॉप की रेडियस दी है, उन्होंने क्योंकि स्टार्ट किया छोटी ड्रॉप से, छोटी ड्रॉप की रेडियस होगी, तो आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के टर्म से लिख दोगे. यू विल गेट द चेंज ऑफ टेम्परेचर, दैट विल बी द, उस केस में इट विल बी द डिक्रीज ऑफ, दैट विल बी द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया, एनर्जी रिलीज हुई, और उसने क्या करा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया. राइट. नाउ सी स्टूडेंट्स, Excuse नाउ me, sir. वन मोर थिंग अबाउट इट. कैपिलरी में जब सरफेस टेंशन के ड्यू टू लिक्विड राइज करता है, सो आप ध्यान दोगे ये मिनिस्कस है, और मिनिस्कस के ऊपर जो टेंजेंट है कैपिलरी के वॉल के साथ, इट मेक्स एन एंगल थीटा. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा. नाउ व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड टू रिमेंबर. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? मिनिस्कस के ऊपर जो टेंजेंट है, इट मेक्स सम एंगल विद द वॉल ऑफ द कैपिलरी इनसाइड द लिक्विड.
दिस व्हाट एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ग्लास और वाटर कॉम्बिनेशन के लिए, ग्लास और वाटर कॉम्बिनेशन के लिए थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, meniscus will be concave upwards, concave upwards. Liquid will rise up, and liquid will wet the solid. ये कंक्लूजन्स एक साथ, कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप उसके थ्रू बाकी निकालोगे। लिक्विड विल वेट द सॉलिड का मतलब ये हुआ, अगर आपने वाटर की ड्रॉप एक ग्लास की प्लेट के ऊपर डाल दी तो फैल जाएगी, वो ड्रॉप का फॉर्म रिटेन नहीं करेगी। तो ग्लास और वाटर कॉम्बिनेशन के लिए थीटा 90 डिग्री से कम, जब थीटा 90 डिग्री से कम है तो मिनिस्कस कनकेव अपवर्ड्स होगा और लिक्विड उसमें क्या करेगा, राइज करेगा, इट विल राइज अप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसमें लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हाँ, किसी बच्चे ने पूछा कि टेम्परेचर राइज वाला, देखो बच्चे ये होगा इसके पहले वाले में, इन केस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, जब छोटी छोटी ड्रॉप्स बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट होंगी तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सरफेस एनर्जी रिलीज होगी टी इंटू डेल्टा ए, और डेल्टा ए निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो जब सरफेस एनर्जी रिलीज होगी तो वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में और टेम्परेचर बढ़ा देगी। इज दैट क्लियर? एम सी डेल्टा थीटा, एम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर क्यूब, आर बड़ी ड्रॉप का रेडियस है, इंटू डेंसिटी रो इंटू स्पेसिफिक सी इंटू डेल्टा थीटा। और जब एक बड़ी ड्रॉप छोटी छोटी ड्रॉप्स में स्प्लिट होगी, and no one is doing work for it from outside, so work will be taken from the internal energy of the liquid. So T into delta A will be equal to again mc delta theta, but here the delta theta will be the decrease of temperature. So Mane, could you understand? Yes, sir. Is it clear? Okay, now you'll see further. जो आज मैं ये मीटिंग यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, एंड target was कि today I should finish the 11th part, but now it will be tomorrow. Tomorrow I'll finish the 11th part and I'll communicate to you in the WhatsApp.